So, very few students today. Sit down. कौन गया है? क्यों? वैसे बीच में तो आ रही थी, फिर बंद कर दिया उसने। ठीक है। Okay, where did we stop? Last class. Main mirrors completed. Okay, and image formed by a pair of mirrors tilted at some angle. What cases we discussed? We have discussed number of multiple images found between tilted mirrors, right? We discussed that. Symmetric, asymmetric, all of that. Yes. We have discussed parallel mirrors, image formation between parallel mirrors. And also we have discussed image formation between two perpendicular lines. Correct? We have discussed these things. How many images will be found here? Here. Infinite. Yes. Infinite images will be found here. On both sides. Right? You were absent in the last class, right? Would you go through the video lecture? So try to make sense out of it. I think we had already started curved mirrors. We had already started that. This was completed inside. So we'll start with the curved mirrors. Reflection of light or spherical or curved mirror. What was the topic? Spherical mirrors, right? We just started with that. Concave and convex. Yes, there is convex and concave. We were discussing what terms related. Those terms also completed. Types of spherical mirrors is completed. Then there are some terms: center of curvature, radius of curvature, pole, aperture, principal axis. Did we do that? No. Okay. So let us. There are spherical mirrors. क्या terms हो? Terms associated with spherical mirrors. So first is pole. Symbol is P. What is pole of the mirror? So I'll draw the mirror here. So for concave,
So mirror is basically one side is smooth glass surface, the other side is silver coated, and pole is the geometric center. This is pole. Okay, so geometric center of the mirror. So for concave, this is the pole. For convex, this is the pole. Okay. Then next is center of curvature. Symbol is capital R. So this is a spherical mirror. So imagine a hollow glass sphere. So the center of the hollow glass sphere from which this mirror is cut. Okay. So C is called center of curvature. It is the center of the hollow sphere. Center of hollow sphere. Of which the spherical mirror is part of. Okay. So this is center over here, and for this, the center will be on this side. Okay. Then you have the radius of curvature. R. So radius of curvature is this distance between the pole and the center of curvature. Since you don't write anything, you have no idea what topic was discussed last. You come here to sleep. So you're supposed to take notes actually. So you have the idea like what we discussed last. So radius of curvature for concave mirror is on the left side. Okay. Whereas for convex mirror, it will be on the right side. What is radius of curvature? It is the distance between C and P. P and C होगा. Pole से लेके center of curvature. Distance is always measured from pole. So radius of curvature is the distance between P and C. Okay. Fourth. You have focus. Focus we'll discuss later. Then aperture. Okay. So the next thing is aperture. So what is aperture? So from a sphere, when you cut a mirror, right? So this mirror will have a circular edge. Yeah, it will look like a hole, right? Sphere को cut करोगे तो कैसा मिलेगा? It will be like a hole. So this circular edge, right? The diameter of this. What is aperture? AB. It is the diameter of the circular edge of the mirror. So it is the. So what is aperture? This plane area. What is aperture? Mirror का जो ये circular edge है, ये जो plane area है, this is aperture.
So what does it signify? You cannot have light falling off the mirror more than what enters this area. So aperture is the window, okay, or it is the amount of light that falls on the mirror. Aperture decides that. Okay, so light falling on the mirror cannot be more than this circular area. Okay. So what is it? The part of the mirror which is exposed to the incident light is called the aperture of the mirror. Thus, it is the surface of the mirror from which reflection occurs. So they are complicated. Only the first part is good enough, right? So in this case, it is AB. Okay. What is mentioned here? Part of the mirror which is exposed to the incident light. Is that clear? So aperture is this circular area. जिसमें से light अंदर घुसता है. Then the principal axis last. What is the principal axis? The line passing through the center of curvature and pole. That is called principal axis. Okay. So what is it in this case? CP. It is a straight line joining the pole of the mirror to its center of curvature. Straight line. Joining pole and center of curvature. Okay. So so principal axis could like extend both sides like this. So this whole line which is passing through P and C is principal axis. So it can go behind the mirror as well. Is that clear? Now we will use these terms often, right? Okay. Any questions between what is concave and convex and what are these terms? Hope we have understood it well. Now we will study reflection of light from a spherical mirror. So let's so first case let us discuss concave mirror. So this is the first thing we'll draw. Then we'll mark C. Okay. Now whenever light is incident on a mirror parallel to the principal axis. Okay. So this is the point of incidence on the mirror. So what do I need to draw the reflected ray? How do I draw the reflected ray? What do I require for that? Huh? How do I draw reflected ray? For that I need to know the angle of incidence. Then the reflected ray will be at an angle equal to angle of incidence on the other side of the normal. So what do I require?
Incident ray is given to you. I need a normal because without normal I cannot know what is the angle of incidence. So what is the normal at this point? What is the normal on a plane surface? Let's say this is a plane surface, plane reflecting surface. Normal is perpendicular. Now let us say a ray is incident. The ray is incident. Then I have angle of incidence, right? So you said normal is line joining the point of incidence with center. Always remember this. For a spherical mirror, the normal is line joining any point on the mirror with C. So even CP is a normal. Principal axis is also a normal. Understood? So this you have to remember. So this is now angle of incidence. So now when I draw the reflected ray, I construct an equal angle. So I find that this ray passes through midpoint of C and P, and I call that as F. Understood? What is this F? F is called focus. Okay? जब भी हम इंसिडेंट रे का रिफ्लेक्टेड रे बनाते हैं, so the ray actually intersect C and P at a point which is midpoint of CP. Okay? So F is called focus. F. So the sixth term is focus. What is focus? Any ray incident parallel to the principal axis passes through focus. So it is basically midpoint of this. Any incident ray parallel to principal axis passes through focus after reflection. Now these are rules. Any ray which is incident parallel to the principal axis after reflection will pass through focus. And focus is midpoint of CP. So we'll prove this. So relation between R and F. So what is R? R is the distance from P to C. And F is the distance from P to F. So seventh point is focal length. So these are all features of mirror only. Focal length is the distance DF is called focal length. Photo given mirror, given spherical mirror. ठीक है, तो कॉनकेव में फोकल लेंथ क्या होगा? लेफ्ट साइड में होगा. कॉन्वेक्स में फोकल लेंथ कहाँ आएगा?
राइट साइड में, क्योंकि वो आर का हाफ है। रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ ये निकाल। तो अब ये देखो, मान लो ये है हमारा एम, तो कंसीडर ट्राइंगल सी एम एफ। ठीक है, सी एम एफ में क्या होगा देखो, इन ट्राइंगल सी एम एफ एंगल आई इज इक्वल टू आर, एंड ये वाला रे लेंगे तो एंगल ये क्या होगा, आई, एंगल एम सी एफ इक्वल टू आई, ऑल्टरनेट एंगल। एम सी एफ इक्वल टू आई क्यों हो जाएगा, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल है, ये पैरेलल है इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये और ये एंगल सेम होना चाहिए, करेक्ट। एंड एंगल एम सी एफ इज इक्वल टू एंगल सी एम एफ, since angle I is equal to angle R, angle I equal to angle R by laws of reflection, है कि नहीं, by law of reflection, isn't it? तो अब इसमें क्या होगा, therefore triangle CMF is isosceles triangle because sides adjacent to two equal angles are equal. Therefore CF is equal to FM. Adjacent sides of equal angle are equal. Correct? मतलब CF और FM are equal, isn't it? Now we will make one assumption. Now imagine this ray is incident very close to P. Okay. Now assumption. The incident ray. Can I erase 6 and 7? लिख लिया सबने? The incident ray is very close to principal axis. So if the incident ray is very close to principal axis, then M becomes, when point M is same as, then point M is very close to point P.
M can be written as P, right? Therefore, CF is then written as FP. Okay. Okay. So do like now manipulate. Therefore, CF plus FP is equal to FP plus FP. You can do this. अगर CF equal to FP आ गया तो दोनों साइड FP FP ऐड करो तो ये क्या हो गया CP हो गया 2 times F. But what is CP? It is the distance between P and C. So CP is nothing but R. What is FP? F. Focal length. F is nothing but PF. Okay, it is F. So this means F is equal to R by. So this is the relation between R and F. Okay, somewhere we said F is midpoint of CP. So we have proved that. Proof will not come in examination, but you should understand that why F is midpoint of C and P. Okay, this is it. It will be used in numericals. Proof करने के लिए नहीं आएगा लेकिन numerical में आना चाहिए. You could have used अगर concave mirror की बजाय अगर तुमने convex mirror लिया होता then too you can use the same thing. So you can have C here, somewhere here, this is P. So if the incident ray is like, yeah, what is the normal? Is the point of incidence. So normal will be this. In this case, this is angle of incidence and angle of reflection will be, this will be angle of reflection. Okay. So now, since it is behind the mirror, this reflected ray, you will assume that it is coming from where? It is coming from M. Okay. So again, if we call this as point M, this point is N. Here, you're getting CMF here as well. Now, if this is R, this is also R. And this are parallel lines, so this is I. Correct? This and these are corresponding angles. I and I are corresponding angles. And this R and R are vertically opposite angles. So you are getting the same triangle which you got for concave mirror on the left side. For convex mirror, you are getting the same on the right side. So the same steps are applicable here also. Then you get the same result. So whether it is concave mirror or convex mirror, this result is valid for both of them. So anybody has any doubt? Hope it is clearly understood. If not, you can ask. I'll wait for 2 minutes for you to absorb this. So we have used the property of isosceles triangle. Isn't it? If this ray was traveling close,
then this M will almost merge in P. So M and P will be same. So this FM will become FP. So हमें क्या मिल रहा है? CF is equal to FM, which becomes CF is equal to FP. And therefore this and this are equal. So we added FP both sides. So CF plus FP is CP, which is R. And 2 FP is this. That's how it is. So it's not difficult. Okay. So understood reflection. Reflection में reflecting surface से it will obey the law of reflection. I and R. And what do I need to construct the reflected ray? I need a normal. And what is a normal on a spherical surface? Normal at the point of incidence is the line joining C or the radius. Okay? Normal is always the radius. So what are the two normals you can see in the diagram? See the diagram. Identify two normals. CP and M or CF. MF or CF. M should join C. P should join C. So the normal is CM and CP. Understood? Always the radius is the normal on a spherical curve. Okay? Now we will draw various ray diagrams for image formation for various object position. पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे किसके लिए? कॉनकेव मिरर के लिए. ठीक है? So Vivaswat, do you have any questions, Vivaswat? No, sir, not up till now. Is this chapter completed in your school? No, sir, but I studied it a few months back, Okay. skimmed it not properly. Okay. But all queries are sorted till here. Yes, sir. Next is image formation by concave mirrors. So there are about how many? 6 or 7 cases, right? Right. So we will first discuss rays to be considered for image formation by concave mirror. अब concave की वजह हम लिख देते हैं spherical को. Okay. So first, let us draw the mirror. Now this is the rule which has to be obeyed in drawing all the ray diagrams. The first thing before drawing the ray diagram is you will do this. You will have the mirror, then the principal axis with point C and F marked on it. This is the first step. Okay. They have to make sure that F lies exactly the middle of C and F. So what is the first ray? First ray is ray incident parallel to principal axis, right? Ray incident
parallel to principal axis. What happens to that ray after reflection? Passes through focus after reflection. Okay, so this you know. Passes through focus. So you have to have the knowledge of the behavior of the ray after reflection. So ray parallel to principal axis will pass through focus. So this is what will happen. And you have to draw the direction before and after reflection. This is incident ray and this is reflected ray. So the direction is, this is towards mirror, this is away from the mirror. Very, very important. If you do not mark the direction, marks will be cut. Okay. So direction of both incident and reflected ray has to be shown very clearly. Then the next ray is opposite. When the ray is incident parallel to principal axis, it passes through focus. Right? What if the ray is incident along focus? What will happen to that ray after reflection? Opposite. If any ray is incident along focus, after reflection it becomes parallel. उल्टा हो जाएगा. Parallel focus से जा रहा है. So any ray, let's say you change the direction. Any ray which passes through focus will become parallel. Opposite of this. Is reflected parallel to principal axis. Okay. So I can show, like, let's say this is my ray 1. Ray 2 is, I'm showing the rays in the same diagram. So then it should be reflected back parallel. Okay, so this is my ray 2. Okay. The third ray I'm taking is ray incident along C. This is the third ray. So ray which is passing through C is hitting the mirror. But I said any point on the mirror joining C is normal. That means this ray is incident along normal. So what is the angle of incidence here? When the ray is incident along normal? When the ray is incident along normal, the angle is 45 degree. Is that 45 degree? Let's say this is a reflecting surface and this is normal. And the ray is incident along normal. Is the angle 45 degree? 90. Incident ray and normal is the angle 90. Okay, if the incident ray was this, then the angle of incidence is I. Now the incident ray is along normal. What is the angle? What is angle of incidence? Angle between the incident ray and normal. If the ray itself is coming on normal, what is the angle of incidence? What is angle of incidence? Angle between incident ray and normal. Now this is a normal I am saying. And AO is incident. So angle AON, right?
Now, if the ray is incident on the normal itself, what is angle AON? अरे यार ये कम किया और कम किया और कम किया तभी तो नॉर्मल पे आएगा। ऐसे होगा टी होगा कि जीरो होगा जीरो होगा तो कोई बोल कर नहीं रहा है जीरो नॉर्मल 90 है लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंस किस में होता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में होता है ना तो जब रे इसके ऊपर आ रही है नॉर्मल पे ही आ रही है तो ये ऐसा हो गया ना समझो अब पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस ये था कम 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 किया सीधा कर दिया तो रिड्यूस हो के कितना हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस लास्ट क्लास में भी बताया था मैंने whenever था अच्छा आ जाओ तो whenever the ray is incident along the normal तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया जीरो तो रिफ्लेक्टेड रे का क्या होना चाहिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो रे जब नॉर्मल पे इंसिडेंट है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जीरो तो रिफ्लेक्टेड रे का भी एंगल क्या होगा जीरो मतलब नॉर्मल में जो रे आ रही है वो नॉर्मल पे ही रिटर्न होगी इट विल रिट्रेस द पाथ ठीक है तो अब जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ इंसिडेंट है वो कहां से जाएगी वापस वापस उधर क्योंकि नॉर्मल पे है ना ये इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है तो जो सेंटर से जा रही है वो वापस रिट्रेस करेगी ठीक है तो थर्ड वाला रूल हमारा क्या बना थर्ड रे यही सब तुम्हें पता होना चाहिए तब तुम रे डायग्राम बना पाओगे थर्ड कौन सा रे है हमारा ये सब वन टू ये जो वन टू थ्री में रेस लिखते जा रहा हूँ लगा थर्ड कौन सा टाइप का रे है हमारा रे इंसिडेंट अलोंग सी retraces the path after reflection. रिफ्लेक्शन होने के लिए हमको दो चीज चाहिए एक चाहिए पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जो होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे तो फर्स्ट रे के लिए हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस था ये एम सेकंड रे के लिए हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस था एन थर्ड रे के लिए पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है ओ तो एक तो हमें पॉइंट ऑफ इंसिडेंस चाहिए और एक क्या चाहिए नॉर्मल तब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना सकते और एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या रिलेशन है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है तो हर बार हमको लॉ ध्यान में रखना तो थर्ड रे के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या बना थर्ड रे रे अलोंग सी व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस हाँ जीरो क्योंकि सीओ तो नॉर्मल ही है ना सी से कोई भी पॉइंट नॉर्मल है मिरर पे ये जो स्फेरिकल मिरर का ऊपर कोई भी पॉइंट अगर सी को ज्वाइन करेगा तो वो नॉर्मल बन जाए बात समझ में आ गई ठीक है और बाकी किसी पॉइंट पे अगर हमको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाना है तो उस पॉइंट को पहले सी से ज्वाइन करके नॉर्मल बनाएंगे तो हमको एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मिलेगा समझ आए यहाँ पे भी हमारा नॉर्मल क्या है ये नॉर्मल है तो अब हमको एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मिल रहा है लेकिन इस केस में ये नॉर्मल ही है इसलिए ये इस डायरेक्शन में आ रहा है तो इसी डायरेक्शन से रिट्रेस करें
अंडरस्टूड? क्यों? क्योंकि इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? जीरो। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो बनेगा। ठीक। फोर्थ रे हम कहां पे लेंगे? रे इंसिडेंट एट पी, रे इंसिडेंट एट पोल। और मान लो हमारा जो फोर्थ रे है, मैंने इधर से कैसे छोड़ा था कि ये आ रहा है पोल पे। अब तुम बाकी रेस को ध्यान ही मत दो, फोर्थ वाली रे कहां पे जा रही है? पोल पे। रे इंसिडेंट अलोंग पोल। मतलब पी। तो यहाँ पे नॉर्मल क्या है? सीपी। मतलब ये क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो रिफ्लेक्टेड रे क्या बनेगा? दूसरी साइड सेम एंगल, ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे बनेगा यहाँ से। ठीक है। सो रे इंसिडेंट along pole is reflected by equal angle on the other side of principal axis. समझ आ गया? क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस तो नॉर्मल है ना। अभी ये तुम्हारे को ये चार अलग अलग डायग्राम बना के समझाया है तुम्हारे वॉल्यूम में। मैंने एक ही डायग्राम में चारों रेज ली। ये देखो, पहला वाला रे कौन सा है? पहला वाला रे है रे इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो रिफ्लेक्शन के बाद कहा जाता है? फोकस। ठीक है। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाता है। दूसरा वाला क्या है? क्या दिया है रेस? हाँ, ये कन्वीनियंट रेस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इमेज बाय रे डायग्राम, ये दिया पेज नंबर 105 पे। ठीक है। तो सबसे पहला रे इसमें क्या दिया? रे अलोंग सी। तो जो सी से जाएगा वो सी से वापस आएगा। ये हमारे इसमें थर्ड नंबर, हमारे इसमें फर्स्ट है वॉल्यूम। सेकंड क्या दिया? और ये दोनों मिरर के लिए, कॉन्केव के लिए भी और कॉन्वेक्स के लिए भी बताया। कॉन्वेक्स के लिए अगर कोई सी की तरफ जा रहा है तो यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाए। ठीक है। अब ये क्या है? रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। रिफ्लेक्ट होने के बाद कहा जाएगा? फोकस। ये हमारा रे वन है। ठीक है। वैसे ही तुम्हारा कॉन्वेक्स में भी होगा। कॉन्वेक्स में कैसे? रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्ट होके कहाँ जाएगा? अवे फ्रॉम फोकस। अब इसमें फोकस दिखाया नहीं, ये अवे फ्रॉम फोकस है। ठीक है। जो रिफ्लेक्टेड रे को एक्सटेंड करोगे तो फोकस पे जाके मिलेगा बिहाइंड द। ठीक है ना? तो कॉन्वेक्स रे में, कॉन्वेक्स मिरर में वैसा आएगा। ठीक है। अब देखो, फिर नेक्स्ट रे क्या है? रे पासिंग थ्रू द फोकस। यानी कि कौन सा है हमारे केस में? सेकंड वाला, रे पासिंग थ्रू द फोकस। और वो क्या होगा? पैरेलल हो जाएगा। रे पासिंग थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल। और वो कॉन्वेक्स में भी होगा। यहाँ पे अगर कोई फोकस की तरफ रे जा रहा है तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल। ठीक है। यो, फिर लास्ट रे इंसिडेंट एट पोल। फोर्थ वाला, रे इंसिडेंट एट पोल will be reflected on the other side of the principal axis making same angle। जो यहाँ पे था वही इधर हुआ। ठीक है। अब इमेज फॉर्मेशन के लिए हम जो भी डायग्राम बनाएंगे, इन चार में से कोई भी दो रे से हम बना सकते, चारों रे की जरूरत नहीं है। ओके। सो फॉर इमेज फॉर्मेशन
any two rays from above 4 can be considered. During making ray diagrams. ये रूल है। इन चार में से कोई भी दो रेज लेके हम इमेज बनाएंगे। तो इमेज कैसे बनेगा? वो रिफ्लेक्टेड रेज का क्या हो रहा है वो हमें बताएगा कि इमेज कैसा बन रहा है, रियल बन रहा है कि वर्चुअल बन रहा है। ठीक है। So for image formation, any two rays from above 4 rays can be considered during making ray diagrams. Okay? समझ आ गया? तो चलो अब हम एक पहला इमेज बनाएंगे। यहां तक सब ठीक है, पहले लिख लो, यही बेसिक्स है, इस पूरे चैप्टर का यही फट्टा है। अगर ये समझ आ गया तो तुम कोई भी रे डायग्राम आराम से बना सकते। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इमेज नेक्स्ट क्लास में बनाएंगे, थोड़ा सा ही टाइम बाद। हाँ, तो अभी अगर इसमें कोई डाउट है पूछ लो, कुछ भी डाउट है इसमें। ये अलग से टॉपिक है। So, what is the normal for a spherical mirror? देखो ना सामने बना हुआ है रेडियस। स्फेरिकल मिरर का नॉर्मल क्या है? रेडियस। मतलब स्फेरिकल मिरर के किसी भी पॉइंट से अगर तुम सी को ज्वाइन कर दोगे वो नॉर्मल बन जाएगा। रिफ्लेक्टेड रे बनाने के लिए हमको नॉर्मल पता होना चाहिए। ठीक है, लेकिन हर रे डायग्राम में हम नॉर्मल ड्रॉ नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि अभी हमने ये कंक्लूड कर लिया, चार टाइप की रे डायग्राम्स है, चार टाइप की रे कंसीडर करते हैं। तो या तो वो पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस के, या तो एफ से जाएगा, या तो सी से जाएगा, या फिर पी से जाएगा। तीन ही पॉइंट, या तो रे पैरेलल इंसिडेंट होगी, या पी पे इंसिडेंट होगी, या एफ पे होगी, या सी पे होगी, और कोई पांचवा ऑप्शन नहीं। चार तरह से ही रे मिरर को हिट कर सकते, और वो चारों हिटिंग में उसका इफेक्ट क्या होता है रिफ्लेक्टेड रे पे, ये हमको पता है। अगर रे पैरेलल हिट करती है तो रिफ्लेक्शन के पास फोकस से जाएगी, तो हमें नॉर्मल बनाने की जरूरत नहीं। पैरेलल आ रही है तो उसको सीधे रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से निकालो। ठीक है, रे अगर पोल पे हिट करती है तो प्रिंसिपल एक्सिस के दूसरे साइड में रिफ्लेक्टेड रे बनाओ, मेकिंग सेम एंगल। जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एंगल बन रहा है वो नीचे बन। अगर रे सी पे, सी के अलॉन्ग इंसिडेंट होती है तो वापस सी से जाएगी। ठीक है, और अगर रे एफ के अलॉन्ग इंसिडेंट होती है तो वो पैरेलल हो जाएगी, वन का उल्टा है। बस ये नेचर अगर हमको समझ में आ गया, ऐसे बनेगा रे डायग्राम। ठीक है, ये अब हम रे डायग्राम नेक्स्ट क्लास में बनाएंगे, और ये रिवाइज करके आना नेक्स्ट क्लास में आने से पहले, जितना भी अभी तक पढ़ा है। चलो एक बना देते हैं, ये लिख लिया तुमने, सब लिख लिया? एक एक रे डायग्राम बनाने का टाइम है हमारा 25 का, कह रहा है ये लगा 30 लगी। अब हम अलग अलग ऑब्जेक्ट पोजीशन के लिए, सो इमेज फॉर्मेशन बाय
concave mirror. Case 1. Object at infinity. ठीक है, मतलब अगर हमारा मिरर ऐसा है, सबसे पहला स्टेप हमको क्या करना है, होल और मिरर बना दिया। फिर क्या करना है, सी और एफ मार्क करना है। 2 पॉइंट मार्क करो, अभी लिखो मत कुछ भी, ठीक है। तो जब भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, इंफिनिटी का मतलब होता है वेरी फार अवे। ऑब्जेक्ट कहां पे, वेरी फार अवे। तो इंफिनिटी जैसे सन है, तो सन बहुत वेरी फार अवे, तो जब हम सन को देखते हैं तो सन से सारी लाइट रेस कैसे आ रही है, पैरेलल। कोई भी दूर का ऑब्जेक्ट देखोगे तो उस ऑब्जेक्ट से सारी रेस पैरेलल आएंगी तुम्हारे। तो हमें केवल एक ही पॉसिबिलिटी है, रेज विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो एक रे प्रिंसिपल एक्सिस से आया तो कहां से जाएगा, फोकस से जाएगा। दूसरी रे भी हम पैरेलल लेंगे, लेकिन अब हम उसको नीचे से ले लेंगे, क्योंकि जब हमारा ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो सारी रेस पैरेलल ही आएंगी हमारे पास, ठीक है। ये भी पैरेलल है तो कहां से आएगा, फोकस से आएगा। अब इसको लेवल कर दो, तो दो रिफ्लेक्टेड रे चाहिए हमको इमेज बनाने के लिए। ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे क्या, और ये कहां मिल रही है, एफ पे। तो वेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, इमेज कहां बनेगी, इमेज एट एफ। इमेज का प्रॉपर्टी लिखना है हर ऑब्जेक्ट पोजीशन के लिए, इमेज का प्रॉपर्टी लिखना है। इमेज का मतलब एट एफ, और उसका नेचर क्या होगा, रियल। नेचर क्या हो गया, रियल, क्योंकि ये फिजिकली इंटरसेक्ट कर रहा है, रियल एंड इम्पोर्टेंट। और उसका साइज क्या होगा इमेज का, हाईली डिमिनिश्ड या फिर पॉइंट साइज। क्योंकि देख रहे हो ये ऑब्जेक्ट का साइज बहुत बड़ा है दूर से, है ना, लेकिन इमेज क्या हो रहा है, पॉइंट, एक पॉइंट पे आ रहा है, तो हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज, ठीक है। ऐसे ही अलग अलग ऑब्जेक्ट पोजीशन के लिए हमको इमेज का पोजीशन, उसका नेचर और उसका साइज, ये हमको स्टडी करना। सो देयर विल बी 5 more cases फॉर दिस mirror that will explore in the next class, ठीक है। हाँ